जी, आज के एंटरप्रेन्योर हैं आपके सीनियर मोहम्मद अली। और अली इज इनटू फिल्म्स, ही इज इनटू मूवी मेकिंग, ही इज इनटू फोटोग्राफी। ही हैज़ अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और इन्होंने एवा जुबैक, जो सारी दुनिया की सैर करती हैं, उनका जो पाकिस्तान का सेगमेंट है उसका एक सेगमेंट इन्होंने वीडियो बनाया था। ऑल्सो वर्क विद कश्मीर बैंड and he has a good following, and do look up his profile. इसके अलावा दो और सीख्स के हैं, वो आर इनटू फोटोग्राफी। एक तो फुरकान फोटोग्राफी है और एक है फोटोग्राफर। अगर किसी को किसी और का पता है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। ओके, सो we're through with the first three CLOs, and now we're going to start talking about finance. Inshallah, 2 weeks before the लास्ट 2 weeks के अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, और उससे पहले हम ये ख़त्म कर लेंगे आपका कोर्स। इन मेन टाइम आपका ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंस। नाउ फाइनेंस is what you can call the K factor, the constant factor in your life as well as in the life of any business. पैसा नहीं होगा तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, एंड एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू नीड बिजनेस। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फाइनेंस इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। लोग छोटी छोटी मतलब एक एस्पेक्ट के ऊपर PhD तक कर लेते हैं, बट एज फार एज यू आर कंसर्न you should know these 4 things. Number 1, कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं और कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में। thirdly, कि जो बिजनेस लाइफ साइकिल है उसके अंदर आपको किस वक्त किस तरह का फाइनेंस चाहिए होता है। एंड लास्टली, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं पैसे रेज करने के लिए, किसके पास जाते हैं और क्या क्या तरीके हैं पैसे रेज करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अंडर द टॉपिक ऑफ फाइनेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम डेफिनेशंस। सो एक बेसिक डेफिनेशन जो है फाइनेंस की वो ये है कि जी इट इज़ द साइंस ऑफ फंड्स मैनेजमेंट। ठीक है, फंड्स क्या होते हैं? दे कम इनटू द कंपनी एंड दे लीव द कंपनी। सिमिलरली फंड्स कम इनटू योर लाइफ एंड लीव यू in the term of expenses. Now, you've also heard the term capital. So what does capital mean? Capital means financially is the actual money that you have so that you can buy goods. And once you buy goods, you can use those goods in the production of other goods. ठीक है, अब आप मसलन you must have, अगर आप एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस खोल रहे हैं तो यू मस्ट हैव इनफ कैपिटल कि आपके पास कम से कम लैपटॉप तो होने चाहिए या कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए। यू नीड कैपिटल फॉर दैट। So every business requires capital. Okay, so let's start with the first aspect, and that is basic financial statements. और ये 3 statements हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं या ना जाएं, ज़िंदगी में आपको इन 3 स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, so that you can judge, gauge either your own financial health or the financial health of others. इन 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर तमाम दुनिया की स्टॉक मार्केट्स चलती हैं और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर दुनिया की इकोनॉमी चलती है। तो जस्ट टू टेल यू कि ये तीनों स्टेटमेंट्स कितनी कितनी अहम हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। ये मैंने अभी यही बात की थी कि भाई यू मस्ट बी, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, यू मस्ट बी एबल टू रीड देम, यू मस्ट बी एबल टू नो व्हाट दे मीन, कि इस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है। इससे हम
क्या अखज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्टली रिमेंबर, एवरी बिजनेस मस्ट मेक अ प्रॉफिट। तो पहली जो है बेसिक स्टेटमेंट, उसका नाम है जी बैलेंस शीट, बैलेंस। और इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग की इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमेशा इस इक्वेशन के बेसिस पे बैलेंस रहना चाहिए। और बैलेंस किस में? इसकी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। पहले मैं ज़रा इनको समझा दूं। एसेट्स यानी कि असासे आपके, और उसके अंदर आप देयर आर करंट एसेट्स एंड देयर आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मसलन वेल इट इज़ कैश इटसेल्फ। सेकेंडली अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपके कितने लोगों ने पैसे देने हैं, बिकॉज व्हेन दे पे तो यू विल गेट कैश। नंबर 3 इज़ योर इन्वेंट्री, यानी कि आपके पास बेचने के लिए माल कितना है। जब वो बिक जाएगा तो आपके पास पैसे आएंगे। नाउ देयर आर लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑल्सो, जो कि आपके पास मसलन आपके बिजनेस के पास ज़मीन है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। दीज आर व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म एसेट्स। और एक दोज आर टेंजिबल, एक होता है एसेट जिसको कहते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट जो है ये, इससे आपकी कारकर्दगी मुंसलिक है, यानी कि आपकी रेपुटेशन। इसको उर्दू में कहते हैं पगड़ी। आप जब कोई दुकान लेने जाते हैं तो कहते हैं कि जी किराया इतना है लेकिन पगड़ी इतनी है। पगड़ी का मतलब यह है कि भाई उन्होंने इतना टाइम गुजार के दुकान चला दी है। तो हर दुकान की पगड़ी होती है। और what is in English it is called goodwill. The goodwill you have generated for that. Now if you have a corner plot, so there's a good chance the goodwill is going to be more for that shop. Okay, so you have current assets, which measures what is called the liquidity of a company. यानी कि जितनी जल्दी आप किसी एसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, द मोर लिक्विड यू आर। मसलन गाड़ी के हवाले से अगर आपके पास सुजुकी मैरान है तो दैट इज़ परहैप्स द मोस्ट लिक्विड कार, क्योंकि वो फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बाज़ार जाएंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप आज ही बेच लें। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपनी पोर्श बेचने जाएंगे तो हो सकता है आपको साल लग जाए बेचने में। सो दैट इज़ नॉट गुड लिक्विड कार्ड है, ठीक है। सिमिलरली यू हैव लाइबिलिटीज़, यानी कि जो आपने पैसे देने हैं, विच यू कैन देन डिफाइन एज करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जब आप यानी कि एक तरफ आपके असासे हैं और एक तरफ आपने लोगों के पैसे देने हैं। जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को निकाल देते हैं तो आपकी नेट वर्थ निकलती है, यानी कि आपकी इक्विटी उसमें बनती है। सो एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी आपकी कंपनी की इक्विटी, वो तब पता चलता है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एसेट्स फ्रॉम लायबिलिटी। और ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, ठीक है ना। इक्विटी जो है वो बताती है कि जो आपने शुरू में पैसे लगाए थे उसकी अब वैल्यू क्या हो गई है। सो एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू शो यू a couple of videos which will also make the balance sheet clear. Okay, just hold on. A balance sheet is a statement of the assets, liabilities, and equity of a business or other organization at a particular point in time. A balance sheet can also be described as a snapshot of a company's financial condition. A balance sheet is broken up into 3 sections: assets, liabilities, and equity. The difference between the assets and the liabilities is the equity of the company,
also known as net assets, net worth, or capital. So, you're starting a business. You go to the bank and get a loan. On your balance sheet, this loan shows as a liability, as it has to be repaid to the bank. It also shows as an asset for the same amount as you have the cash to spend. Thus, the balance sheet is balanced. You need to buy a computer for your new business. The cash in your assets decreases, but your new computer asset helps balance this. As you sell to your customers, your profits are recorded as retained earnings in the equity section. The cash from these profits is recorded in the asset section, and the sheet remains balanced. Every month you make a loan payment to the bank. Your liabilities reduced by the amount of the payment, and your cash is reduced by the same amount. If at any point you need to find out your business's worth, go back to the formula from before. Assets minus liabilities equals equity. Get a rebranded version of this video along with Okay, ये थोड़ा सा और detailed है. So this is what we're going to cover. Part 1, which should go for about 6 or 7 minutes, is going to cover your financial position, where you sit financially in your business, and this is going to cover the balance sheet, which is a vital part. All right, so I'm going to start with something very simple, a house, in order to explain this particular concept. So the house itself is considered an asset, and in this case, let's say the asset is worth $500,000. Now, what we want to know when we're looking at the house is how much is owed to the bank. So in this case here, we're going to say about $200,000 is owed to the bank, and that's considered a liability because you're liable to pay it, and it's an obligation to the bank. So in effect, in this case, of the $500,000, the bank owns, until you pay it back, $200,000 of it. The remainder here, this top portion of $300,000, is what you own, and this is what's known as your equity. So when you own a house, you're very interested in how much equity you have in the house, and that's in effect how much you personally own. If you sold it today, how much would you get? And in this case, if you sold it today, you pay the bank back $200,000, you get $300,000. So we can look at it another way. So this $500,000 house is equal to the $200,000 owed to the bank plus the $300,000 of your equity. Or in another way, the asset is equivalent to the liability owed plus the equity. And this is the fundamental element of accounting, and it's known as the accounting equation. Very simple, right? Your asset, any asset you have, is either owned by you, equity, or in some respect is owned by others, the liability. And that's what we want to look at with your business, is how much of your business do you actually own? So let's take, for example, this shop here, a bakery, and it's owned by Tom and Jane. And they've been running for a few years and been doing very well. We'd like to know if Tom and Jane decide to sell their business today, what they would actually get for that particular business. So the first thing we need to look at is, well, what is the total business worth? Its asset. And let's just say it's $2 million. But unlike a house, it's made up of many different elements. How much cash the business has, the inventory the business has to run it, accounts receivable, so money owed to you by customers, the equipment you have to run the business, any vehicles you use in the operation of the business, and possibly, if you own it, the building itself. So all these elements in this case add up to $2 million in assets. So now we want to look at the liabilities of the business. What does the business owe to other people? And in this example, it's $1.5 million. And that could be made up of credit cards, bills owed for supplies, any leases on equipment or vehicles, and major loans to the bank. So in this case, Tom and Jane owe $1.5 million. And therefore, we need to look at how much equity Tom and Jane actually have. In this case, it's $500,000. So here we go. Tom and Jane, if they were to sell the business today, would make $500,000. And this business, this asset, this is what it is worth to them in the current market. And this is what accounting tells us.
So we can look at it again this way. The asset of $2 million is equal to the liability of $1.5 million. That's what owed to other people, plus their personal equity of $500,000. And this is what we look at when we're looking at a balance sheet. That's all it is. That's what the balance sheet shows you. It shows you on one side, well, what are the assets? We've got cash, inventory, vehicles, equipment, and the total value of the assets is $2 million. So on the balance sheet, we want to then look at, well, okay, good. If that's the total value of the business, how much is owed to other people in the form of liabilities? So you've got bills, we've got credit cards, leases, and bank loans. And in total, that comes to $1.5 million in liability. So now we can show, if you went assets and you took away the $1.5 million, we're obviously going to have what's left over in equity, which is what Jane and Tom own, I should say. So they have shares in the business, so their equity is made up of shares, the amount of money that they put in the business to start with, but it's also made up of their profit, because every year when they make a profit, their cash is going to go up, so therefore their equity, or how much they own of the business, is going to go up. In this case, they own $500,000. Okay, this is a very important point जो कि आपको पता होना चाहिए. देखें, बैलेंस शीट के अंदर आप बिल्कुल राइट साइड को देखें. सारा मकसद ही बैलेंस शीट का ये होता है कि आपने अपनी इक्विटी कितनी बढ़ाई है. अब फर्ज करें टॉम एंड जेन जो हैं, इन्होंने शुरू किया था बिजनेस लेट से 2 लाख से. सो इनके शेयर्स जो थे शुरू में पहले दिन जिस दिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और अगर इनके पास 2 लाख डॉलर थे तो इनके पास कैश था, लाइबिलिटी ज़ीरो थी, तो इक्विटी इनकी 2 लाख थी. अब इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस 2 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया. सो इफ़ समबडी वांट्स टू बाय द बिजनेस ऑन डे 1 तो वो 2 लाख, बट नाउ इफ़ दे वांट टू बाय तो 5 लाख. अब आप ये देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये अपने बिल्स कम करते जाते हैं तो इनकी इक्विटी बढ़ती जाएगी. सो द होल आइडिया इज़ कि भाई आप बैलेंस शीट का स्नैपशॉट तो एक टाइम पे लेते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द बैलेंस शीट शोज़ कि आपने बिजनेस को कितना बढ़ा दिया है, बिजनेस की वर्थ जो है वो कितनी बढ़ गई है, एंड that shows your success, and you have to be profitable in order to show that kind of success. ठीक है. सो ये बैलेंस शीट का सबसे बड़ा फायदा है. And this is what the balance sheet in effect is showing you. It's showing you all the assets, which is worth 2 million, broke that down into all the liabilities owned, which is 1.5 million. Therefore, what we have left over, either made up of shares or profits, is $500,000. So this investment for the two owners is worth $500,000 to them personally if they sold the business today. And that is all you need to know at the front end of a balance sheet. And we can go. Okay, now let's get back to the presentation. और ये मैं क्लास में जनरली ये एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ. ये भी बैलेंस्ड है, या थोड़ा सा ये एक और सैम्पल बैलेंस शीट है. इसके अंदर आप वही देख लें कि एसेट्स क्या हैं. अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो पहले 3 करंट एसेट्स हैं, और जो बाकी हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं. और लाइबिलिटीज़ आप देखें, और फिर इक्विटी, पर ये हमेशा बैलेंस में होगा. 900,000 equals 900,000. Okay, so let's move on to the importance of the balance sheet. So what does it do? It reveals financial status. Okay, shows trends over a period of time, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था. और इन्वेस्टर जो हैं वो इसको एनालाइज करके देखते हैं कि भाई इनके पास कैश कितना है और इन्होंने कर्जा कितना देना है.
तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर आपका डेट ज़्यादा है और इक्विटी कम है तो इट इज़ नॉट गुड। अगर आपके, जिस तरह ये टॉम एंड जॉन के केस में उनका 3 था, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है। वन वन या 1 से कम हो तो अच्छा होता है, यानी कि आपकी इक्विटी ज़्यादा है और आपने कर्जा जो है उसको वो कम देना है, which means you are quite cash rich. Okay? So you must know what a balance sheet means and you must know how to read a balance sheet. अच्छा, बैलेंस शीट के बाद आती है सेकंड इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। इन एवरी बिजनेस यू हैव टू मेक अ प्रॉफिट। एंड हाउ डू यू शो प्रॉफिट? वेल, मैथमेटिकली आप एक चीज़ बेचते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप लेट से कुर्सियाँ बेच रहे हैं, एक कुर्सी की सेलिंग प्राइस अगर 5,000 है, आप उसको ख़रीदते हैं या बनाते हैं, उसकी बनाने की जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 3,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2,000। अब इसमें से आपने पानी, बिजली, इंटरनेट, गैस, सैलरीज, ये सारे खर्चे जब निकालेंगे तो आपकी नेट इनकम आएगी बिफोर टैक्सेस, और जब टैक्सेस लग जाएंगे तो फिर आपकी नेट इनकम आएगी। सो very simply put, revenue minus expenses should be positive in order to show profit. And you are always in business to show profitability. और जो profit and loss statement होती है, it is done from a period of time. So जब हम टैक्स रिटर्न्स देते हैं अपने पर्सनल, पूरे साल के देते हैं, कंपनीज भी वैसे तो रिपोर्ट साल के करते हैं या 6 महीने के करते हैं। आप अपने तौर पे हर महीने की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ डन फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एन एंडिंग पॉइंट। ये आपको अब इसी तरह सिमिलरली, लेट मी जस्ट शो यू 2 वीडियोस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। Profit and loss statement, or P&L, is an account compiled to show gross and net profit or loss during a specific time period. Profit or loss is equal to your income minus your expenses. For example, you manufacture widgets and sell them to your customers over the internet. During the month of June, your income was £10,000. The first expense you need to subtract is direct expenses. A direct expense is any cost directly related to the production and sale of your product, such as raw materials, shipping costs, and labour for assembling the widgets. For this example, your direct expenses are £4,000. This gives you a gross profit figure of £6,000, or 60% gross profit. Next, you need to remove your operating expenses from your business during the month of June. This can include advertising, accountancy fees, heating, lighting, rent, salaries not directly related to sale, and more. For this example, your operating expenses are £4,500. So if we take the income, remove the direct costs and operating costs, this gives you a net profit of £1,500. If your figure is a negative, then you've made a loss during this period. Profit and loss statements show you how much money you're making or losing in a specific time period. They allow you to compare past performance and detect any issues with sales margins and expenses. Get a सिमिलरली मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जो रेलेवेंट पोर्शन है। Particular asset. All right, so let's look at a business. We've got a bakery. Tom and Jane own this particular bakery. And of course, they've gone into business ultimately because they want to earn a profit. They want to make money. They want to put money into the business. They want to sell things. And of course, they have expenses. But out of that, they want to make a profit so they can pay themselves so they can live. Now, of course, there's many other reasons to go in business because you love doing it. You've got a good or service that you think is so valuable to people, you just can't stop yourself. But ultimately, you're going into business to make a profit to fund your particular living expenses. So, of course, when we're looking at a profit and loss, we're looking first
at the revenue. So the bakery shop sells bread to its customers. Customers pay revenue to the bakery shop. On the expenses side, and this is one element to take into account, when we're looking at the expenses of a business, we're specifically looking at the expenses incurred in the earning of the revenue. So we're not interested in every expense that could ever occur for Tom and Jane. We're only interested in the expenses that they incurred in the making of their revenue from selling bread. So in this case, we're going to look at things like their supplies. Of course, they've got to pay money for that. They might have eggs for the bread. They have to pay money for that. We've got flour, and we've got other bills, say for utilities and so forth, of course, which are all expenses incurred in the earning of the revenue. And that's the main definition we look at within a profit and loss report. So the profit and loss report really has three parts. We start with the revenue, which is really how many breadsticks or how much bread did we sell and what was the value of that, less all the different expenses that we've incurred throughout the particular period, the expenses that were incurred in the earning of that revenue. And then we look at, well, if the revenue was greater than the expenses, in this case, there's more bread sold than expenses, then we should make a profit. Now, here's the thing. So what does the profit and loss show us? Apart from obviously we made a certain amount of money or we made a loss. It really shows you, does management have control of their business? I can look at a profit and loss report and tell within about 30 seconds whether the management is effective, how good they are, and I can predict their future operation of the business just by looking at their profit and loss. The more profit that's generated, so the greater the revenue is over the expenses, generally speaking, the greater control that management has over their business. The lower the profit, or once we get into loss, we know that that business is totally out of control, management is not doing their job, and either needs to work out how to do it properly, get trained, or needs to be replaced. When I go into a turnaround and I look at the profit and loss report, I can tell you whether management should go in 30 seconds or stay. Some people don't like that because they think, well, I need to analyze it more, there's more to look at. But the reality is that report will tell you all about the control in your particular business. So when we're looking at control, you need information. So we've got the bakery, it's an asset, and it's made up of, or it has certain liabilities, and it has certain equity. Now, that when a business makes a profit, it increases the value of the assets, but it also increases the owner's equity. Obviously, with more profit, the business is more valuable. And this is how the profit and loss ties in with the balance sheet, because every time you make profit, your cash goes up, so your assets increase, and your owner's equity goes up because the business is now more valuable. Okay, that is good enough. Here is an example of an income statement. So effectively याद रखें कि जितना आप बेचेंगे उसमें से आप expenses निकालेंगे तो you need to show a profit and a net income. And what is the importance of an income statement? Well, first of all, it tells whether a company is making a profit or not, and then again, if you see it over a few time periods, you can see patterns emerging, and it gives you clues also. For instance, ये जो इन्होंने डबरोटी की दुकान का एग्जांपल दिया है, उसके अंदर अगर ये डबरोटियाँ ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा. फर्ज करें डबरोटियाँ उतनी ही बेचते हैं लेकिन अंडे कम इस्तेमाल करते हैं, तो अंडे का एक्सपेंस कम हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि फिर भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. ऑन द अदर हैंड, उनका क्वालिटी कंट्रोल अगर उसके ऊपर ठीक नहीं है तो दे माइट एंड अप लूजिंग कस्टमर्स इन द लॉन्ग रन. सो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई हाउ डू वी मेक मनी, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. Okay, so next time, if there are no questions, if there are any questions, do let me know. पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि जी स्टार्टअप्स की नेटवर्क कैसे निकालते हैं,
तो जनरली स्पीकिंग स्टार्टअप की जो नेटवर्थ है वो आप एनुअल रेवेन्यू को उठा के या 12 से या 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो फिगर आती है वो उसकी नेटवर्थ होती है. ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन कैश फ्लो, which is a topic very close to my heart, और इसकी हम फिर क्लास में एक एग्जांपल करेंगे. एंड जनरली आई टेस्ट पीपल ऑन cash flow because for startups cash flow is extremely important.